एंथैल्पी एज एनर्जी होंगी है। एनर्जी मतलब होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग वगैरह तो मैंने उसमें दिखाया है, but we are going to use it as energy. जब भी enthalpy का word आए, you will understand that it is what it is, energy. Now, what is ionization enthalpy? Ionization enthalpy. My voice is muffled. I'm reading a few lines, Jasleen and others. Please let me know how is it. The energy required to remove most loosely bound electron from a neutral isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. Yes, sir, now it's fine. Now it's fine. So there are a few definitions. We wrote definition, and we have seen that because we want to remove electron, and electron is attracted by nucleus. So in order to remove the electron, we'll have to put some energy. And that is why this process will always be endothermic process. That means we will always require energy to remove electron. When we remove the first electron, we call it the first ionization enthalpy. If we remove the next electron, we call it second ionization enthalpy. If we remove another electron, we call it the third ionization enthalpy, and so on. We'll write next point. I hope you have written till here. Those who have not written, please don't worry. Leave some pages. You must have watched the recording and so on. Okay. First point in today's class is going to be the energy required to remove subsequent electrons from an atom is called successive ionization enthalpy. Successive ionization enthalpy. The right next point. Successive ionization enthalpy is always greater than the previous ionization enthalpy. That is kind of obvious also, because if I look at first and second ionization enthalpy, if I compare them, A is neutral and we are removing electron, it will be difficult. But when A is having a positive charge, the electron will be even more attracted towards the nucleus because of positive charge B, right? So the removal of the second electron will be even more difficult, and it will require higher ionization enthalpy. That's why successive ionization enthalpy is always greater than the previous ionization enthalpy. Next point. Now, the removal of electron. And if an atom, it has a tendency to lose electron, that is the property of metal. I hope you आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, शायद इसका से डायरेक्टली किसी ने नहीं पढ़ाया हो, लेकिन if you remember, for example, sodium था, potassium, and when you used to make compounds, sodium, magnesium, potassium, all of these, they used to lose electron. And what are these? All of these are what? Metals. And in comparison to that, think about chlorine. Chlorine is always going to gain electron. Oxygen always gains electron. I hope you have done covalent bonding, ionic bonding, in ionic bonding, transfer of electron. In transfer of electron, for example, NaCl, Na gives 1 electron to chlorine. याद आ रहा है? Magnesium oxide, magnesium gives 2 electron to oxygen. याद आ रहा है? जो पिता जसीन सबिया शाइमा जैनब जी बताएं. You must have done this ना? नहीं किया आप लोगों ने? जो पिता Yes, sir. Yes, sir. ये है ना? ठीक है.
ठीक है. सो देयर आर 2 पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू राइट दिस, है ना, इसको दिमाग में बिल्कुल रखिएगा. मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की. So if there is an atom which is loose, that will have higher metallic character. So metallic character is high if T is low. If this less energy to remove electron, less energy to remove electron, easily the electron is removed easily. So your voice is lagging. Metallic character, my voice is lacking. It will be okay in a few minutes. Divided by 1 upon ionization enthalpy. हम यहाँ पे क्लिक करते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव second electron from an atom is called ionization enthalpy. Now, हमें ऑर्डर नहीं समझ नहीं आ रही है क्या? Am I lagging? Okay, okay, okay. Let's try once more. The energy required to remove subsequent electron from an atom is called successive ionization enthalpy. Still lagging? I'm still lagging. It seems. No, not lagging. No, sir. Okay, okay. Take it. Okay. I hope you have now you have understood a few things about ionization enthalpy. Now we are going to lag about. We are going to write about factors affecting ionization enthalpy. ठीक है? Factors affecting ionization enthalpy. Factors affecting ionization enthalpy. ऐसा ना माइंड को आप लोग ऑन रखिए. ऐसा ना ऐसा अभी मत ना अभी ऐसा मत रखिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप, हाँ हाँ यस यस, आप हम पढ़ा रहे हैं. आप इस चीज से समझिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तब when you are going to have more attraction, और घटेगी तब when you are going to have less attraction. ठीक है ना? इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. यस सर यस सर यस सर करके मत चलिएगा. ठीक है ना? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्टिव, है ना? तो लोग आप बिल्कुल ऑन है दिमाग आप लोग का. इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. if the electron is highly attracted तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, है ना? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. एंड इफ इट इज नॉट अट्रैक्टेड हाईली, इफ इट इज लोली अट्रैक्टेड या फिर इन्फ्लुएंस बहुत कम है, लेस अट्रैक्टेड, देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी लोअर. सबसे पहला बहुत आसानी से आने वाला है साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम. ठीक है? वी नो दैट इफ साइज इंक्रीजेस then what we can say, because size increase करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा. इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो निकालना आसान होगा because it is away from the nucleus and that's why nucleus cannot attract it as effectively. So size increases, then we will say ionization enthalpy decreases. So basically ionization enthalpy की अगर हम बात करें, it is inversely proportional to size. Second,
charge on nucleus. Charge on nucleus. ठीक है, that means Z effective. राइट, Z effective that means अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्ट अच्छे से करेगा, और अट्रैक्ट अच्छे से करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर. सो इफ Z effective is high, the atom will have, or the nucleus will have, the nucleus will have higher positive charge, which will strongly attract the electron, making it difficult to be removed. That is why ionization enthalpy will be also higher. So we can say that ionization enthalpy, that is line to state करते हुए, therefore ionization enthalpy is directly proportional to Z effective. अच्छा, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस सुकून से रहिएगा, ठीक है ना. लिख रहे तो लिखिए, नहीं लिख रहे तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. एक बार हम आप लोग को आराम से दिखा देंगे, यू विल राइट इट आउट, ठीक है, डोंट वरी. पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल, ठीक है. now please remember, S subshell, it is nearest to the nucleus. So if an electron is present in the S subshell, बाकी चीजें सेम है मान लीजिए, है ना, बाकी चीजें आपके क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. एंड इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द S subshell, तब it is difficult to, it is difficult to remove electron, because S subshell is nearer to the nucleus, followed by D subshell, followed by D subshell, and followed by F subshell. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ऑल द एक्सेप्शंस ना, सारे एक्सेप्शन का जो रीजन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए, stable electronic configuration, stable electronic configuration will have higher ionization enthalpy, because the electron configuration is stable. If you remove an electron, you are going to remove an electron, then it will unstability. ठीक है, electronic configuration is higher, so atom will not want to lose the electron, so it will have higher, it will give higher nuclear charge in order to save it. That means half filled and fully filled subshell will have higher ionization enthalpy. चलिए, अगर आपने नहीं लिखा है ये, अगर लिख दिया है तो raise your hand. सिस्टम से जा रहा है सर, आई एम लैगिंग. ये सबके लिए लैग नहीं कर रहे हैं, आई थिंक. रैनम, am I lagging guys? Timer, am I lagging? Sir, in between you lag. In between. Let me know if I have to explain any point. 1, 2, 3, 4 में से कोई point explain करना है, then please let me know. Sir, Let can me you know if I explain the want, fourth if you point? want any. Oh my God, please ठीक है ना. Keep your mic on. Stable electronic configuration याद है, half filled, fully filled, stable. Yes, do you remember? Half filled Sir, and can you fully say filled it again? subshells are more stable. Half filled and fully filled subshells are more stable. ऐसा कुछ सुना था ना? Yes, sir. हाँ. So if half filled and fully filled subshells are more stable, if half filled and fully filled subshells are more stable, then from that subshell, after removal, what will happen? It will not be half filled and fully filled, ना? Because if you are going to remove an electron, तो half filled fully filled नहीं बचेगा फिर वो. For example, P3 है, ठीक है, तो P3 is half filled. If you remove one electron, it will be P2. So it will be going from stable to unstable. That's why it will be difficult to remove that electron. And when it is difficult to remove an electron, the ionization enthalpy is higher. Make sense? Yes, sir. Raise your hand.
Waiting for Jovita, Jasleen and Sabiha. Waiting for Jasleen and Sabiha. चलिए पहला पॉइंट लिखिए वेरिएशन इन ग्रुप. Variation in group. ध्यान सुनिएगा है ना. We know that Z effective does not change when we move in a group. Movement in a group will always be understood. The variation in group किसी भी चीज का will always be understood on the variation in the shells. As we go down, the shell number increases. As we go down, the shell number increases, the size increases, and that is why what is going to happen? Ionization enthalpy will decrease because it is inversely proportional to size. Size बढ़ेगा, ionization enthalpy will decrease. So right here with me, ionization enthalpy decreases as we go down the group, from top to bottom, due to increase in size of atom. Increase in size of atom. कैसे size of atom increase कर रहा है? By increasing the shell number. है? Shell number increase कर रहा है as we go down. चलिए next देखिएगा variation in period. Variation in period. ठीक है, प्लीज राइट. राइट विथ मी है ना. एंड उसके बाद आपको सभी आएगा along the period from left to right, the size decreases and Z effective increases. We have seen this in the previous lectures. ठीक है, साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, Z effective it increases. Therefore, in general, the ionization enthalpy will increase along the period from left to right. From left to right. Let me know if you want me to explain this. साइज घट रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज व्हेन जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस. मेक सेंस एवरीवन? यस ऑन द पिक्चर में कविता जतीन सबिहा शायमा ज़ैनब फातिमा हां याना बताएं. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. यस ना. ठीक है. irregularities है, there are some irregularities in trend. यहाँ से स्टार्ट होता, फ्रॉम हियर द हेट्रेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री स्टार्ट्स, है ना. एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है यहाँ तो. ओ माय गॉड, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, देखो फिजिक्स में कहाँ होता है एक्सेप्शन, मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता है. ठीक है, तो यहीं से वो जो हेट्रेड है टुवर्ड्स केमिस्ट्री स्टार्ट, उसको हम बताते हैं. लाइक आई विल हैव टू डिफेंड, द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट एक टीचर है तो. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है. होता तो है, दिखाया भी आप लोग को हमने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक, बट द थिंग इज दैट एवरीथिंग हैज अ रीजन, है ना. हर एक चीज का कुछ ना कुछ रीजन है. तो ध्यान से देखिए जरा. यू डोंट नीड टू राइट दिस नाउ, ये आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. ये आपकी क्या है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. ध्यान से देखिए.
अगर हम लाइक दिस इज प्राइस ऑफ अ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोला हमने, समझ में आया आपको? प्राइस ऑफ अ स्टॉक, शेयर, शेयर मार्केट, मेक सेंस? किसी किसी भी चीज का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आलू प्याज गोभी, ठीक है, किसी भी चीज का प्राइस ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब नो सर बोलेंगे तब तो समझ में आएगा, आप क्लास में है। ओके, प्राइस ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेक सेंस? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, थैंक यू। ऐसा है कुछ। व्हाट इज द ट्रेंड? प्राइस इंक्रीज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में या डिक्रीज कर रहा है? व्हाट विल यू से? Increasing. Increasing. क्या कोई डाउट है आपको इसमें कि ये इंक्रीज कर रहा है? इस तरह एनी डाउट? नो ना? No. No. द प्राइस इज इंक्रीजिंग। कोई आदमी आके कहे देखो यहाँ तो लेकिन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, व्हाट विल यू से? Yeah, that is part of the trend. Correct? Makes sense? Yes or no? That is part of the trend. If the price overall, what is happening? Overall, there is an increase. बीच में कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना बताएं? Does this make sense? Yes, sir. ठीक है, तो उसी तरह से चीजें हैं। ठीक है, तो इन टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, बीच में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। And if I go from, if I go in a period from left to right in a period, if I'm going from left to right in a period, then what is going to happen to ionization enthalpy? It is going to increase. बीच में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? That is not called as exception, वो part of the trend कहा जाएगा, ठीक है? तो उसी को देखेंगे, what are the irregularities in that trend? Write the heading irregularities, irregularity, irregularities in trend. First one is beryllium versus boron. एक्सपेक्टेड क्या है? देखिए, बेरिलियम बोरॉन बोथ ऑफ देम आर इन द सेम पीरियड। बेरिलियम उसके बाद बोरॉन, है ना? सही है, आया ना? अरे बोलो तो भाई, तरीके बता रही है मुझे। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. so what is the expected trend ionization enthalpy of beryllium and boron का अगर हम बात करें, then what should happen in a period? If I move left to right, then the ionization enthalpy, Increases. increases. तो हाँ, increases भाई लिखाया है यार अभी। तो बोरॉन का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बट व्हाट इज द एक्चुअल? एक्चुअल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है बोरॉन हैज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल, which is farther from nucleus, whereas beryllium has the last electron in s subshell, which is nearer to nucleus. Okay, this is the reason. Beryllium क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। You can see the last electron कहाँ पे? 2s में। If I talk about boron, it is 1s2 2s2 2p1। The last electron is in the p subshell. ठीक है, so it is further away, that's why it can be removed easily.
फ्रॉम न्यूक्लियस, फार्दर 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 वर्ड होता ना भाई। फार्दर मीन्स वेरी मच, एट अ डिस्टेंस, दूर। नियर का अपोजिट ही होता होगा, अपोजिट ऑफ नियर। फार्दर, नियरर, ऑल ऑफ दी, फार्दर फर्दर, ऑल ऑफ दीज आर अपोजिट्स, ठीक है। रेज योर हैंड इफ यू डन गाइस, रेज योर हैंड इफ यू डन। ठीक है, सेकंड जो है ना आपके पास, ये आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैग्नीशियम वर्सेस एल्यूमिनियम, सिमिलर टू अबव, ठीक है। व्हाट यू विल सी, होना एक्सपेक्टेड एक्चुअल हम बस दिखा दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्या था, एनीवन स्टिल राइटिंग, एनीवन स्टिल राइटिंग, एनीवन स्टिल राइटिंग, नो वन इज राइटिंग, ठीक है। एक्सपेक्टेड वाज एल्यूमिनियम शुड बी मोर, एक्चुअल क्या है, मैग्नीशियम इज मोर, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट मैग्नीशियम, इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 12 1s2 2s2 2p6 3s2, aluminum 13 1s2 2s2 2p6 3s2 pp1, ठीक है। सेम रीजन दिख रहा है आप लोग को, हाँ या ना बताएं। तो बेटा जस्टीन सबिहा टाइमा जैनब, we have to remove the electron from s subshell in the magnesium atom, and in the aluminum atom you have to remove from the p subshell, ठीक है। that is why it is difficult to remove from magnesium rather than aluminium. aluminium में आसान होगा because p is further away, s subshell is nearer, that is why it is going to be difficult. Make sense everyone, yes or no, please tell me, समझ में आया Yes. Yes, सबको, sir. ठीक है। थोड़ा स्पेस छोड़ के रीजन वगैरह आपको लिखना है, सेम रीजन बता दीजिए, कोई बात नहीं है, just you will change the words there. यहाँ पे we have written everything in terms of boron and beryllium, here you will write in terms of aluminium and magnesium, ठीक है। थर्ड लिखिएगा, after leaving some space, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन में एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, राइट। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है द सेम पीरियड, सो इफ इट इज लेफ्ट टू राइट व्हेन वी गो इन अ पीरियड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज। एक्चुअल में क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, रीजन nitrogen has more stable half-filled 2p3 substance, ठीक है। मेन रीजन यही है, that is why half-filled है तो ज्यादा stable, that is why it is difficult to remove the electron. Nitrogen 1s2
2s2 2p3. The last subshell is like this: oxygen 1s2 2s2 2p4. Just like this. So यहाँ पे आपके पास थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बिकॉज ऑफ पेयरिंग है, if you remove the electron oxygen will become half filled, वो भी एक रीजन। बट मेन रीजन क्या है, नाइट्रोजन हैज मोर स्टेबल हाफ filled सबसे, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। टॉपिक इज डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Waiting for Jovita, just Jovita, Sabiha, and Jovita and Sabiha only. Just waiting for Jovita now. Jovita, please raise your hand once you are done. Jovita, please raise. Jovita, are you there in the class? Jovita, let me know if you are still writing. Jovita is not here. Okay, there is a one very beautiful question in the NCERT. See here. The first ionization enthalpy values of the third period elements, sodium, magnesium, and silicon, are respectively. So we have been given some values of ionization enthalpy of what? Sodium, magnesium, and silicon. For sodium, it is 496. For magnesium, it is 737. For silicon, it is 786. Okay. Now, they are saying predict whether the first ionization enthalpy value for aluminium will be closer to 575 or 760. So they are saying for aluminium, it will be closer to 575 के आसपास होगा, or it will be closer to 760 kilojoules per mole. That is the question. ठीक है, इतना सारा डेटा देके, ठीक है, this is the question that they have asked, but in reality, do you know what they are asking? ध्यान सुनिए। Okay, try to answer me, don't write now. ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन में है, डेटा हमने लिख दिया है, you just need to focus on the data and tell me, जो given data है, choose the element whose ionization enthalpy lies between these two values. Choose the atom whose ionization enthalpy lies between these two values. In the chat में बताइए। We have one value 575, another value is 760. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा वैल्यू है, सोडियम और मैग्नीशियम और सिलिकॉन, whose value lies between these two numbers? Whose ionization enthalpy lies between these two numbers? In the chat. Yes, Zana, very good. Saima, very good. आराम से हो जाएगा, देखिए जरा। I hope you are able to understand the question. Whose value lies between 576 and 760? Whose value lies between सोडियम का, मैग्नीशियम का और सिलिकॉन का? इट शुड बी ग्रेटर देन 576 एंड लेस देन 760. कौन सा वैल्यू है? ओनली टू आंसर्स। यस, जोबिता करेक्ट, वेरी गुड। जोबिता है क्लास में? और किसका आंसर नहीं आया? जसलीन, आपका आंसर नहीं आया है, एंड सभी आपका आंसर नहीं आया। जसलीन,
Did you understand the question? Yes, Jasleen. Yes. No कहा आपने? Can you have your mic on? Just repeat the question. Okay, Jasleen. क्या कीजिएगा? Tell me. Repeat my The words. first Okay. time. वो नहीं हम बोल रहे हैं. Repeat my question. ठीक है? From sodium, magnesium and silicon. बोलिए. समझ के बाद. From Sorry, sir. sodium, magnesium. Just repeat what I'm saying. You will understand what I'm trying to ask. ठीक है? From sodium, magnesium and silicon. Sodium, Repeat after. magnesium, and silicon. Okay, and when I'm saying sodium, magnesium, silicon, please try to look at sodium, magnesium, and silicon in the screen. Okay, whose ionization enthalpy Ionization enthalpy is between 576 and 760? is between 576 and 760. बताइए. Whose ionization enthalpy, tell me, from sodium, magnesium, and silicon? Magnesium. See, I did not give you any other data, right? Correct, Jasleen? Yes, sir. I did not even give you hint, right, Jasleen? What did we do? Yes, sir. I just asked you to repeat the question after me. Okay? So whenever now what you will use this. These are tools, guys. And ये सबके लिए. Whenever you are not able to understand something, try to pause, repeat what the teacher is saying. You can apply this in any subject. Okay? Try to repeat what the teacher is saying, focusing on the screen wherever that part is written. है ना? And then you just do that. वो physical act है, mental work आपका दिमाग करेगा, right? And your mind will automatically get it. You will not have to put too much of effort. ठीक है, Jasleen? Will you try this whenever you are getting stuck or something? Yes, sir. ठीक है, चलिए. So I hope सभी आपको भी समझ में आ गया होगा. Yes or no, सभी that magnesium is the Yes, sir. सभी tell me. ठीक है. 736. अब देखिए बहुत ही आसानी से नहीं कर सकते हैं. If the ionization enthalpy of aluminium is less than that of magnesium, then the value will be closer to 576. है ना? Magnesium plus 737. If other aluminium का कम हुआ, so 737 is between 576 and 760. ना? If aluminium is having lower ionization enthalpy than magnesium, तब it will be closer to 576. And if aluminium is having higher ionization enthalpy than magnesium, that value will be closer to 760. Does this make sense now? Yes, Shaima, tell me, what are you saying? Does this make sense? Yes. Shaima, they have asked the value, the ionization enthalpy of aluminium will be closer to 576 or 760. For reference, we have magnesium. If the ionization enthalpy of aluminium is less than magnesium, तो 737 से कम होगा. And if it is less than 737, then it will be closer to 576 rather than 760. Make sense? If it is less than 737, it will be closer to the 576 part. Yes, sir. है ना? But all of you understood this question, please tell me. Yes, sir. तो बताइए क्या होता है? Which is true? 576 या 760 कौन सा आंसर होगा? I think we have done aluminium magnesium. दिखाया हमने नोट्स में थोड़ा सा similar to beryllium and boron करके. 576. 576, right? Because the ionization enthalpy of magnesium, it is more than that of aluminium.
So the correct answer will be delta Hi of aluminium is closer to 576 kilojoule per mole. ठीक है? चलो बिल्कुल ही अलग मतलब लाइक these data they don't have any values है डेटा का तो कुछ वैल्यू ही नहीं बचा ठीक है completely different approach बिल्कुल नहीं चलिए please copy this down and also please remember the like the funda the approach use हुआ है whatever approach we have created for this particular question we cannot write that approach कि पहले जो बीच में है उसको चूज करो उसके बाद एल्यूमिनियम आयन से ऐसे कंपेयर करो ठीक है तो दैट अप्रोच विल हैव टू रिमेंबर if you want to write something extra other than what I have written in the screen, you are welcome to write. Okay. If you want to see, because the notes, it should be useful. When you are reading the note, you should be able to remember everything that was done in the class, how the teacher explained something and the other. Right. So if you want to write something extra, अपने लिए, then please you can write it down. Raise your hand once you're done. So 575 लिखा है 576 लिखा है इसको इसको ठीक कर लीजिएगा इस 575 ठीक है ठीक है बट द अप्रोच डज नॉट चेंज है ना ऐसा कुछ नहीं सभी हाँ वेटिंग फॉर यू सभी इज देयर एनीवन जिसका स्कूल चल रहा हो raise your hand मतलब अभी raise मत turn your mic on if your school is still going on turn your mic on सच्ची का स्कूल चल रहा है जो बेटा Yes, sir. holidays have start Yes, sir. Today. uh, अच्छा today was the last day Yes, sir. what about others just leave Zainab you're still going to school Zainab No, sir. नहीं ठीक है सबिहा छुट्टी हो गई सबिहा Yes, sir. ठीक है you guys can lower your hand you guys can lower ठीक है सबिहा you can lower your hand ठीक है another thing is that online classes किसी का चल रहा है क्या is anyone having online classes during the vacation is anyone having online classes during the vacation हाँ जो बेटा नहीं No, sir. no what about others Jasleen No, sir. online classes from no Sabiha No, sir. Shaima No, sir. ठीक है चलो वेरी गुड ओपन ओके think I'm thinking like I can have extra classes on Sundays. Okay. But I'm not able to decide which chapter should I start. Like we will be having at least 6 week holidays, if you know. All of you, 6 weeks, 8. 8 weeks. At least 6 weeks will be there, right? At least 6 weeks. Sir, in that half of time, I will not be there. One, where will you be? So I'm going to India. इंडिया में इंटरनेट है भाई वी आर नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री नाउ है ना वी आर डेवलपिंग कंट्री भले ही ठीक है आपके जितना पैसा नहीं है इंडिया के पास सऊदी वऊदी की तरह है भाई इंटरनेट चलता है लेकिन यहाँ पे
Sir, I ठीक है won't be जोगिता? in my house. I will be in my relative's house sometimes. So We will what? go to Malaysia So also. So I you will won't go be. to Malaysia. So I मलेशिया भी won't be. जाइएगा आप? Sir, we are going after 3 years with my father. So we will go somewhere. और कौन कौन घूमने जा रहा है भाई? हाँ? Anyone else? ठीक है. So what will happen to those classes which you will miss? Tell me, Jovita. So I will tell that time. हैं? Sir, What? sir, हाँ, tell me. sir, from July 19th onwards, some classes I won't be able to attend. Fine. Then what will happen to those classes? What will you do for those classes? Learnivio will send recorded classes. You will watch that? Yeah. ठीक है, fine. Okay. But I will be taking Sunday extra classes. Okay. Okay, Fine. sir. Okay. Okay, you will get the recordings. And see, the reason why I'm going to take extra classes on Sunday is very simple. The thing is that when like I have this extra time, like when the school will start, the school will be in a very harsh type of rush to complete the syllabus. And then you will be having tests and everything. Now I am going to get like at least this 6 weeks of time, at least 6 lectures. Okay, that I can have classes. I don't know right now, Zainab. I have not decided on the timing right now, but you will get the message. Is there any problem? अच्छा किसी को कुछ और message? Sir, I have physics classes on Sunday. Tell me. Yes. The classes will be in the afternoon or morning, like from 11 a.m. your timing. Okay, somewhere something like that. Sir, Sunday Okay. morning. Sunday morning. What happened, Jasleen? Sunday morning, I'm not available. Not available Sunday morning. कितना time? Like from when to when? In UAE, UAE आप अपना from 10 बताइए. o'clock to 12:30, I'm not available. 10 to 12:30 or not? Okay. Morning I can't tell. Zainab, why? Sir, I have church in that time. No. Zainab. Zainab, Oh, नहीं पूछ रहा है. Zainab, why can't you attend? जोबिता आप तो घूमिए, मलेशिया घूमिए, आप क्या क्लास करेंगी? जैनब बताइए, जैनब. फ्रॉम 11. 1 घंटे की क्लास है आपके कुरान की, आप बोलते हैं आप सुबह ही नहीं अटेंड कर पाए. अरे तो 12 के बाद तो कर सकते हैं जैनब. sir, that's morning. No? अरे हाँ ठीक है भाई, मॉर्निंग ठीक है. 10 से 11 कर सकते हैं कि नहीं? 10 से 11, 9 भी तो मॉर्निंग. 1 घंटा आपने कुरान क्लासेस में तो सुबह ही कुछ नहीं है. ठीक है. Before तो आई एम 11, I सेइंग can. बिफोर 11 यू कैन ना. हाँ ठीक है फिर, और नो प्रॉब्लम देन. ठीक है. आई विल डिसाइड. आई विल. चलिए अभी आप लोग हैं तो आप लोग से ही हम पूछ लेते हैं. Zainab, where are you from? UAE or KSA? KSA. KSA. 9:32. I think this will not work for Jasleen. Jasleen, what did you say? What was your timing for church? 10 o'clock to 12:30. 10 to 12:30. भाई. Your 12:30 will be 1:30 in KSA, na? So it will be Right. 11:30. 11:30. अच्छा. Okay. It will be 11:30. ठीक. Okay. So if I go down,
9:30 to 11 a.m. KSA. That would work for Jasleen. 11 to 12 हो जाएगा, नहीं ना. 9:30 will be 10:30 for you ना. हाँ Jasleen. Yes, Yes, sir. Jasleen. It will be 10:30 for Okay. us. 10:30 होगा. So I can go from 1 p.m. to 2:30 p.m. KSA. नहीं, 1 p.m. 12 12 12 12 12 इतना सब कर जाता है इसमें. 12 नून या 12:30 करते हैं. 12:30 नून से 12:30 to 2 p.m. KSA. Will this work? Yes, sir. Anyone has any difficulty in this timing? Tell me. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Let me know. अब रुक जाइए सर. रुकिए रुकिए रुकिए. 12:30 to 2 p.m. KSA on every Sunday of summer vacation. एक एक करके सब लोग लिखिए नो सर. नो सर, उसके अलावा कुछ नहीं लिखिएगा. ठीक है. इन द चैट देखिए, चैट में हमने मैसेज किया है, लिखिएगा तो लिखिए नो सर. ये थम्स अप नहीं चलेगा. नो सर लिखो हमको प्लीज. थम्स अप मत कीजिए जसलीन. हाँ, गिव मी नो सर. नो इश्यूज. सिर्फ साइमा क्या हो रहा है भाई? नो इश्यूज. वेरी गुड. हाँ, लिखिए लिखिए सब लोग लिखिए. वेरी गुड जसलीन. जोबिता एंड हु इज लेफ्ट? साइमा, सबिहा. Jovita and Sabiha waiting for you guys. ये यस सर क्या लिखा आपने? डिलीट करो मैसेज. एनी इशू? यस सर. क्या इशू है बताओ सबिहा, क्या इशू है? Sir, there's no issue. नो इशू तो नो इशू लिखेगा ना. एनी इशू विद दिस टाइम यू विल से नो सर. डिलीट कीजिए मैसेज ये दोनों, सबिहा एंड जोबिता. हाँ सबिहा, सबिहा डिलीट कीजिए इसको. डिलीट करने नहीं आता? आता है. हाँ जोबिता नहीं. नो इशू. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. अगर जो आप लोग नहीं आए ना क्लास, और आप लोगों ने अगर जो कहा है सर मेरा उस टाइम ये है सर, वो है, हम सब ये भेज देंगे आपके पेरेंट्स. देखिए इन लोगों ने कहा था कि कोई इशू नहीं है, उसको सेव करके रखो. क्या बैच का नाम है आपका? इलेवन C1. Sir, हाँ हाँ, अब तो हो गया खत्म. हाँ सब ये बताइए बताइए.
सर इट्स नॉट एवरी संडे का प्रॉब्लम, बट लाइक मैं इंडिया में हूँ ना, तो लाइक आई थिंक लाइक 2-3 वीक्स में कोई शादी है संडे के दिन, इसलिए। संडे में सुबह के दिन भी शादी? सुबह के दिन तो नहीं होगी ना? सर यहाँ पे शादी मतलब 11 बजे चले जाते हैं सब लोग और शाम को 7-8 बजे वापस आते हैं। 7-8 बजे आ जाते हैं? हाँ सर। बहुत जल्दी भाई। दोपहर की शादी होती है आपकी यहाँ? हाँ सर, दोपहर में होती है, बट लाइक हम क्लोज वंस है तो सुबह में जाके शाम को वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, तो दैट इज मतलब दैट इज नॉट एन इशू ना, मतलब ऐसा कुछ तो उसमें ये नहीं है। ठीक है, एक दो संडे चलेगा, मतलब एक दो संडे में तो ऐसा मतलब रेगुलरली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। मतलब ऐसा फॉर एग्जाम्पल जैसे कुरान क्लास है किसी को चॉइस है, right? तो उनके रूटीन में आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट माय एक्स्ट्रा क्लासेस इज नॉट मेकिंग ए हिंड्रेंस इन देयर रूटीन। ठीक है, कोई रूटीन वर्क संडे को हो रहा है उसमें हम कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, इफ दैट टाइम ऑन योर संडेज आर वेकेंट, तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा क्लास। अब कभी कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। एक दो संडे तो चलेगा ना, एक दो संडे, एक तो ऐसे क्लास भी मिस हो जाती है। मुझे तो शायद आप क्लास भी नहीं आए फिर, है ना? बिकॉज शादी है तो वो रात तक रहेगी भाई। 7-8 बजे क्या खत्म होता है इंडिया में? 7-8 बजे कुछ नहीं, 7-8 बजे तो मेहमान पहुंचते हैं यहाँ। 7-8 बजे नहीं पहुंचते, 9-10 बजे से मेहमान पहुंचेंगे। चलिए ठीक है। सवाल लिखिए, सवाल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ lithium is less than that of beryllium, but second enthalpy of lithium is greater than that of beryllium. Explain. All of you done writing questions? Yes. सवाल लिख लिया सबने? Yes, sir. लिथियम से पहले हम कहा जाएंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी करके we will go to lithium positive. Fine. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखना हम लोग को, तो विल आल्सो गो टू सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। काम करते हैं। यहाँ पे आपको लगेगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे आपको लगेगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन। So now we are going to look at the electronic configuration also, है ना? So how the electronic configuration is changing, because main funda is whenever you are going to have irregularities, so first of all you will think about the whether it is following a trend. If something is not following the trend, then the reason will lie in the electronic configuration always. So lithium, atomic number 3, electronic configuration 1s2, 2s1. Lithium positive electronic configuration will be 1s2. Lithium 2 positive electronic configuration will be 1s1. ठीक है, we are going to compare. अभी बिल्कुल इसी की तरह we are going to do the same thing for beryllium also. We are going to do the same thing for beryllium also. देखते रहिएगा, अभी मत लिखिए प्लीज। Beryllium will be beryllium positive and beryllium 2 positive. Hydrogen, helium, lithium, beryllium. Beryllium is atomic number 4, 1s2, 2s2. Beryllium positive will be 1s2, 2s1, and this will be 1s2. ठीक है, 1s2. Now, they are saying ionization enthalpy of first ionization enthalpy of lithium, it is less than that of beryllium. Beryllium का ज्यादा है. That is fine, because lithium से आप कहाँ जा रहे हैं? Beryllium. And if you move along the period left to right, अगर आप left to right जा रहे हैं period में, then what is going to happen? Obviously, the ionization enthalpy is going to increase. So this one is not an irregularity. Does this make sense? Yes or no? Please tell me.
लिथियम का Yes. कम है, बेरिलियम का ज्यादा है, दैट इज फॉलोइंग द ट्रेंड. बट व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में लिथियम का ज्यादा है और बेरिलियम का कम. व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो यहाँ पे कुछ फंडा है, इस यहां से यहाँ पे कुछ फंडा है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस. Fine. If you look at lithium positive, it is having an electronic configuration that is 1s2, which is noble gas configuration. Does this make sense? Yes or no, please tell me. Fully fit. Yes, sir. है ना? ठीक है, so this is noble gas configuration, and if you are going from noble gas configuration, if you are removing an electron from noble gas configuration, then it will be very difficult, because noble gas configuration are what? More stable. Make sense? Yes or no? सही है? Yes, sir. Does this make sense? Okay, so basically, and what is happening to beryllium? Beryllium is achieving the noble gas configuration. ठीक है, तो it is going from stable to unstable, and beryllium to positive, it is going from unstable to the noble gas configuration, which is stable. That is why stable to unstable will be difficult, and unstable to stable will be easy. And whatever is difficult will have higher ionization enthalpy, and whatever is easy, it will have lower ionization enthalpy. Therefore, lithium is having higher ionization enthalpy than beryllium. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आराम से हम लोग रीजन लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के ही बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे. इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, first ionization enthalpy, lithium is less than that of beryllium, because beryllium has higher Z effective and smaller size. Also, lithium is attaining noble gas configuration in lithium positive. ठीक है, तो पहले के बारे में सारा कुछ हमने बता दिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑल्सो बेरिलियम हैज हायर जेड इफेक्टिव, लोअर स्मॉल साइज. दैट इज वाई बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और लिथियम का कम इस वजह से भी है बिकॉज लिथियम जो है ना 1s2 2s1 से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल रहा है इसको, तो इट इज गेटिंग अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन. दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि लिथियम का क्या है छोटा, लेकिन मेन रीजन क्या है, बेरिलियम हैज हायर जेड इफेक्टिव एंड स्मॉलर साइज. अगला, इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, lithium positive, which has noble gas configuration, is losing electron is losing electron. Therefore, it is difficult to remove electron from lithium positive. Hence, it has higher ionization enthalpy 2 than beryllium. Raise your hand once you're done.
Raise your hand, right? If you're done, guys, please raise your hand. Waiting for Jyotita and Sabina. Waiting for Jyotita and Sabina. Jyotita will disconnect. Okay. चलो, ठीक है. So everything. Jyotita cannot hear my voice. Jyotita, are you done writing? Jyotita, can you hear me now? Yes, sir. Yes, Jyotita, are you done writing? Yes, sir. Okay. Next, take all of you guys. Electron gain enthalpy. Please reading कीजिएगा ना. Whatever we have done, we have done some questions. उसको read करके हो जाएगा. You don't need to like practice सब करने की जरूरत नहीं है because numericals अब नहीं बचे है ना. Practice करने की जरूरत नहीं है, but keep reading guys, है ना. Also आप start कर दीजिए. Start reading the first chapter also. मूल concept से ही start कर दीजिए read करना. ठीक है. एक bookmark ले लीजिए type से. One type of bookmark. And as you are finishing some portions ना, तो bookmark की तरह mark करते रहिए. इतना हमने पढ़ा है, इतना पढ़ा है daily. ठीक है. And daily you should be revising parts. चलिए, electron gain enthalpy. This was written by delta H Eg, or we can also write EGE. ठीक है, EGE. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बस समझ लेते हैं, उसके बाद मेन जो कहानी है नेक्स्ट क्लास में आएगी. ठीक है. Try to understand. First of all, we will take the same thing, neutral isolated gaseous atom. है ना, we are going to take one atom. We have one atom which is in gaseous form, and we are going to add an electron. Please don't write anything. Leave your pen aside. You can see. When you are going to add one electron, it will get A negative, which is still gaseous. Right? Let us suppose we are taking a sodium nucleus with 11 charge. The first shell will be having 2 electrons. The second shell will be having 8 electrons. I'm not going to draw the 8 electrons, but you understand it's going to have 8 electrons. The third shell will be having 1 electron. So the total of how many electrons? 11 electrons. When you are going to add 1 electron, then what's going to happen, please? We have added 1 electron. Right? This is the incoming electron. This is the green one is the incoming electron. Please don't write anything, try to understand now. In the initial case, we had 11 attractions. What does it mean? Nucleus तो एक ही है आपके पास. In the nucleus, you are going to have 11 protons, है ना? 11 protons are ऐसे, like it is not अलग-अलग. It is not like separate such as electrons. The protons are all the protons are on in the nucleus. Now you're going to have 11 attractions. How? This nucleus will be attracted towards this electron, and there will be attraction with the 8 electrons. There will be one attraction towards this one also. The total of 1, 2, 8 will be 10 and 11. How many attractions will be there in this system when we have added one more electron? How many attractions? Tell me. Initially, we had 11 attractions. Now, how many attractions will be there? 12. 12 attractions, right? Because 11 to initially wala tha. We have added one more electron. That electron will also be attracted towards the nucleus. So here you will be having 12 attractions. And always, whenever there is attraction, energy is released. जब भी attraction देखिए, repulsion क्या होगा? Energy.
Whenever there will be a repulsion, that will be unfavorable for in terms of energy. Will be not favorable in terms of energy. Whenever there is repulsion, whenever there is attraction, that is good for the system. That is going to release energy. तो इतना समझने के लिए सारी ड्राइंग थी because number of attraction increases, electron gain enthalpy is generally what it is generally going to release energy, है ना? वो हमेशा generally क्या होगा exothermic होगा. So the first point that we will write is generally energy is released on addition of electron to an atom. Therefore, delta Heg is generally negative. It is generally negative. ठीक है. कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ हीलियम देखिए यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है एंड हियर इट इज हैविंग ओनली फर्स्ट शेल. इसमें इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. If you are going to add 1 electron, then what's going to happen? 2 positive, right? Here it had electrons. Now what we need to do? We need to add another shell. एक electron बस नहीं add कर रहे हैं. I have to add another shell also because the first shell can hold only 2 electrons. तो अब second shell आना पड़ेगा. This second shell will have the electron. Now please try to understand this second shell. एक तो आप second shell में electron डाल रहे हैं, ठीक है? And what you are doing, you are disturbing the noble gas configuration, which is ultimate stable, and you are disturbing that noble gas configuration. और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? You are adding one more shell. Now this incoming electron will not even feel that much attraction because the nucleus was able to attract only till first shell. First shell that it can attract effectively. ठीक है. जो second shell आएगा उसमें उतना attraction होगा ही नहीं. Why? Because it is only having 2 positive charge. Right? That is why what's going to happen in noble gas only. Noble gases have high positive value, of delta Heg. That is, energy is required for addition of electron due to stable electronic configuration and also the incoming electron is added to a new orbit requiring high energy. ठीक है. Copy this down. Raise your hand once you're done. So generally it is going to be negative. Noble gas में high positive होगा. Noble gas में we need to give energy while giving the electron. Can you scroll up? Okay, fine. Shama, is this clear? यहाँ तक ठीक है? Yeah, you want me to scroll even more up? Sure, this is enough.
Raise your hand once you're done, guys. Waiting for Jovita, Justine, and Shaima. Just waiting for Justine now. Justine, raise your hand once you're done, Justine. Okay, done, everyone. So that's it for today. We are going to look at the factors affecting electron gain enthalpy. Then after this, we will be requiring at least, I would say, 8 class to the 8 class. Yeah, we may even have to go toward like 2 classes. 8 class to the